Hello students, in this video we will derive Euler's equation for fluid motion and then to obtain Bernoulli's equation. In mechanics and property of matter for B.Sc part 1 physics honors, physics subsidiary and physics general courses. It is lecture number 10 of mechanics and property of matter. First of all, we will derive Euler's equation of fluid motion and then we will obtain Bernoulli's equation from it. सबसे पहले हम लोग यूलर्स इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मोशन को डिराइव करेंगे एंड इसके हेल्प से बर्नौलीज इक्वेशन को भी ऑब्टेन करेंगे. टू डिराइव यूलर्स इक्वेशन, सपोज ए वेरी स्मॉल पोर्शन BC of a tube of flow of length dl. As its length is small, infinitely small, very small, therefore its area of cross section will be uniform. सपोज किया जाता है कि एक बहुत स्मॉल पोर्शन है ट्यूब ऑफ फ्लो का जिसका लेंथ dl. इस ट्यूब ऑफ फ्लो से होकर, दैट इज ट्यूब से होकर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, दैट इज लिक्विड का फ्लो होता है जिसका डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट होता है. सपोज द डेंसिटी ऑफ द incompressible fluid, that is liquid, which flows through this very small portion BC of the tube of flow of length dl, which is a very small length dl, and area of cross section dl. क्योंकि इस स्मॉल ट्यूब का, वेरी स्मॉल ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा, इसलिए कि इस ट्यूब का लेंथ बहुत स्मॉल है. If rho be the density of the incompressible fluid, that is liquid, its mass, that is mass of the incompressible fluid or liquid in the small portion BC is a small m equals to dA into dl into rho. Since mass is equal to volume into density, the volume of the fluid, incompressible fluid, is dA into dl. वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ. क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब का, इस वेरी स्मॉल ट्यूब का dA है जो कि यूनिफॉर्म है इसके बहुत स्मॉल लेंथ के कारण, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ के कारण, एंड लेंथ इसका सपोज किया गया है dl. इसलिए लिक्विड का मास जो फ्लो करेगा इस स्मॉल ट्यूब से होकर, स्मॉल पोर्शन ऑफ द ट्यूब से होकर, BC से होकर, उसका मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. मास स्मॉल m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड वॉल्यूम is equal to dA multiplied by dl, area into length, and if volume multiplied by density we get mass. वॉल्यूम में मास, वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर मास ऑब्टेन होता है. सिंस डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. सो मास ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दैट इज लिक्विड. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिक्विड को सपोज किया जाता है जिसका कि डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म, चेंज टाइम के साथ चेंज नहीं करता है. तो लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड सपोज किया जाता है, जबकि गैस का डेंसिटी टाइम के साथ चेंज करता है,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लो, जब गैस का फ्लो होता है तो उसका डेंसिटी टाइम के साथ चेंज करता है, इसलिए गैस को कंप्रेसिबल फ्लूइड सपोज किया जाता है, जबकि लिक्विड का डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट होता है, इसलिए लिक्विड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का एग्जांपल। तो लिक्विड का ट्यूब के अंदर, जिस लिक्विड का इनकंप्रेसिबल लिक्विड का ट्यूब के अंदर फ्लो होता है तो उसका मास होगा कितना, मास स्मॉल m इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ दैट इज वॉल्यूम dA इंटू dl मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास। सो मास ऑफ द फ्लूइड इन द स्मॉल पोर्शन BC of the tube of flow is small m is equal to dA into dl, d small a into dl into rho, and weight of the liquid that is mg, weight is mass multiplied by acceleration due to gravity. So weight of the liquid mg which acts vertically downward at the center of gravity O, and it makes angle theta to the direction of flow as shown in figure 1. तो इस फ्लूइड का वेट mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जिसे फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है, एंड वेट ऑफ द लिक्विड इज दैट इज फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इनटू स्मॉल g, एंड मास is dA into dl into rho multiplied by acceleration due to gravity g, and weight of this incompressible fluid that is liquid makes an angle theta to the direction of flow of the liquid, जैसा कि देखा जा सकता है इस फिगर 1 में, which is shown in figure 1. वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, जो कि ट्यूब के अंदर लिक्विड का दैट इज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का डायरेक्शन ऑफ फ्लो से थीटा एंगल फॉर्म करता है। देयरफॉर देयर विल बी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट इज mg cos theta along the direction of flow of the liquid, which is shown in figure 1, and another component mg sin theta which acts perpendicularly, which mg sin theta equals to dA into dl into rho, which is the mass of the fluid multiplied by g, that is weight of the fluid, into sin theta, that is vertical component of the weight of the fluid. mg sin theta acts perpendicularly, vertical component, that is other component of the fluid which flows inside a small portion of the tube BC, that is mg sin theta equals to dA into dl into rho into g, वेट हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू साइन थीटा कंपोनेंट है, एंड दिस कंपोनेंट mg sin theta is equal to dA into dl into rho into g sin theta acting perpendicularly to the wall of the tube. यह कंपोनेंट mg sin theta other component or vertical component of weight of the fluid which flows inside the or which flows through the tube, a small portion of the tube. यह ट्यूब के वाल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है mg sin theta, जिसे फिगर 1 में इंडिकेट किया गया है, एंड इट्स इफेक्ट बीइंग ऑफसेट और कैंसिल बाय द लेटरल थ्रस्ट ड्यू टू द एडजॉइनिंग ट्यूब ऑफ फ्लो। mg sin theta का इफेक्ट जो इसके निकटतम सबसे नजदीक का ट्यूब ऑफ फ्लो है उसके लेटरल थ्रस्ट के कारण ऑफसेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, mg sin theta का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। Therefore, we will left with mg cos theta, that is the component of the weight of the fluid, incompressible fluid or liquid along the direction of flow. तो केवल अब
फ्लूइड का वेट का टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में से mg cos थीटा कंपोनेंट ही इफेक्टिव होगा जो कि फ्लो के डायरेक्शन में एक्ट करता है, क्रियाशील है. If a small p be the pressure on face B of the tube, then which acts in the forward direction, pressure P acting on the face B of the tube forces the liquid or incompressible fluid inside the tube. तो बी पर जो प्रेशर है वह फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को और लिक्विड को ट्यूब के अंदर इंटर कराएगा, जबकि अदर इन सी पर जो प्रेशर होगा वह इन बी पर प्रेशर पी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि इन सी से बाहर निकलने वाले फ्लूइड का अपोज करेगा, उसको बाहर निकलने का अपोज करेगा. तो दोनों इंड बी एंड सी ट्यूब के स्मॉल ट्यूब वेरी स्मॉल ट्यूब बी सी के दोनों इंड मतलब बोथ इंड्स दोनों सिरे बी एंड सी पर प्रेशर का जो डायरेक्शन है पी एंड पी एट इंड बी वाइल पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एल इंटू डी एल, क्योंकि डीएल लेंथ है बी से सी के बीच का डिस्टेंस डीएल है, तो सी इंड पर जो प्रेशर एक्ट करेगा वह पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एल इंटू डीएल होगा, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जबकि इंड बी पर जो प्रेशर होगा वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. हेंस फोर्स एक्टिंग ऑन फेस बी ऑफ द ट्यूब इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाई FB equals to pressure multiplied by area of cross section, that is pressure acting on face or end B of the tube is a small p multiplied by area of cross section of the tube is uniform, that is dA, where dA is the area of cross section of the tube at both ends or both faces B and C of the tube, because it is uniform. Since length of the tube is very small, therefore area of cross section is uniform. And force acting on the other face or other end C of the tube in the backward direction is given by FC equals to a small p plus del p upon del L bracket closed multiplied by dA. It is in the backward direction, while force acting on face B of the tube is in the forward direction. Therefore, net force or the resultant force acting on mass dA into dl into rho of the fluid in the tube is given by capital F equals to FB minus FC plus mg cos theta, that is dA into dl into rho into g cos theta. So write down net force acting on mass dA dl into rho of the fluid in the tube BC is
capital F equals to FB minus FC. FB is P multiplied by pressure P at end B of the tube multiplied by area of cross section of the tube, which is uniform, into dA. Pressure multiplied by area is equal to force. So force acting at face or end B of the tube is P into dA. This is FB minus FC. Since FB is acting in the forward direction, while at the other face or other end C of the tube, force acting at C is in the backward direction. So it is minus FC is P under bracket P plus del P upon del L into dl bracket closed multiplied by dA. Pressure acting at end or face C of the tube is P plus del P upon del L into dl multiplied by bracket closed multiplied by area. Pressure multiplied by area of cross section of the tube dA is equal to force acting at end C of the tube on this force is acting on the fluid at end C or face C of the tube in the backward direction, because pressure at C is also acting in the backward direction, which opposes the emerging fluid at face C of the tube. Plus mg cos theta. M is dA, mass of the liquid in the tube is dA multiplied by dl multiplied by rho multiplied by g into cos theta. Mass equals to area into length, which is a volume multiplied by density rho multiplied by small g. It is weight of the liquid multiplied by cos theta, component of the weight. And the direction of mg cos theta is along the direction of fluid motion in the tube, that is along the force acting on face B of the tube, that is FB. mg cos theta का डायरेक्शन FB के along है. ट्यूब का एंड B पर क्रियाशील एक्ट करने वाले फोर्स FB के डायरेक्शन के लॉन्ग mg cos थीटा है, इसलिए mg cos थीटा को सम किया गया, जबकि ट्यूब का फेस C अदर फेस C पर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में करता है, उसे माइनस किया गया. नाउ वी कैन राइट P dA माइनस P इंटू dA आफ्टर रिमूविंग द ब्रैकेट को हटाने पर माइनस डेल P अपॉन डेल L इंटू DL मल्टीप्लाइड बाई DA प्लस लास्ट टर्म इज DA DL रो G cos theta. Now first term in RHS PDA and now second term minus PDA after removing the bracket को हटाने पर अब सेकेंड टर्म माइनस PDA है, जो कि फर्स्ट टर्म प्लस PDA से कैंसिल हो गया. और F इक्वल्स टू, नाउ वी गेट F इक्वल्स टू माइनस डेल P अपॉन डेल L इंटू DA प्लस DA इंटू DL. area of cross section into length is volume multiplied by density is the mass. वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर लिक्विड का मास होगा, जो कि ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है. सो लास्ट टर्म इज DA DL इंटू रो मास मल्टीप्लाइड बाई G, दैट इज वेट मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा इंटू cos थीटा. In place of mg cos theta, we have written dA dl into rho into g cos theta, and suppose it is equation number 1. As v be the velocity of the fluid which enters at face B or end B of the tube,
then acceleration of the fluid in the tube is dv upon dt. According to Newton's second law of motion, force is equal to mass into force is equal to mass into acceleration. So in LHS we can write in place of force, net force, resultant force acting on the liquid. कैपिटल एफ नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है जो ट्यूब के अंदर लिक्विड का मास dA इंटू dl इंटू रो पर एक्ट करता है. तो यदि स्मॉल ट्यूब BC जिसका लेंथ dl है उसके इन B पर इंटर करने वाले लिक्विड का वेलोसिटी अगर सपोज किया जाए, यदि सपोज किया जाए v है, जिसे इंडिकेट भी किया गया है डायग्राम में फिगर 1 में, तो एक्सेलेरेशन फ्लूइड का ट्यूब के अंदर dv अपॉन dt होगा. सो इन प्लेस ऑफ एक्सेलेरेशन वी कैन राइट dv अपॉन dt. सो नाउ LHS of equation 1 using Newton's second law of motion becomes force is equal to mass into acceleration. Mass is dA multiplied by dl into rho multiplied by g. Sorry, dA into dl multiplied by rho. It is the mass of the liquid or incompressible fluid inside the tube. This is mass multiplied by acceleration. Acceleration is dv upon dt. So it is dA into dl into rho, mass of the liquid multiplied by acceleration. Since force is equal to mass into acceleration, according to Newton's second law of motion. So LHS becomes dA into dl multiplied by rho multiplied by dv upon dt is equal to minus del p upon del l into dl into dA plus dA into dl into rho multiplied by g into cos theta. और dA into dl into rho multiplied by dv. In place of dv by dt, we can write now taking the most general case when the velocity is the function of both length of the tube and time t also. अब most general case को suppose करते हैं जिसमें कि वेलोसिटी फ्लूइड का वेलोसिटी ट्यूब का लेंथ एंड टाइम दोनों पर डिपेंड करता है. तो उस सिचुएशन में v द फंक्शन ऑफ l and t, so we can write dv equals to del v upon del l into dl plus del v upon del t into dt, and now it is dv by dt. तो dt से फिर डिवाइड करना होगा. So in place of dv by dt we can write del v upon del l, क्योंकि पहले वेलोसिटी फ्लूइड का लेंथ का भी फंक्शन होगा एंड टाइम का भी फंक्शन होगा. मोस्ट जनरल केस में हम सपोज कर सकते हैं. सो डेल वी अपॉन डेल एल इंटू डी एल एंड इट इज इन द डिनोमिनेटर इट इज डी टी. सो डी एल अपॉन डी टी प्लस नाउ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड incompressible fluid or liquid is also the function of time. So it is del v upon del t multiplied by dt, and in the denominator it is dt by dt cancel हो गया, 1 हो गया. ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू माइनस डेल p अपॉन डेल l इंटू dl प्लस मल्टीप्लाइड बाई da प्लस da into dl into rho into g multiplied by, now from figure cos theta, in place of cos theta we can write minus del h upon del l, where h is the vertical height of the tube BC. We have taken the tube, a very small portion of the tube BC of length dl. So h is the vertical height of the tube BC from a chosen plane. So cos theta, we can write cos theta as minus del h upon del l. So in place of cos theta we have we can write minus del h. We have minus del h upon del l.
in both sides dl into dl will cancel out. RHS में dl and da दोनों टर्म में, बोथ टर्म्स में कैंसिल कॉमन होगा, जिससे कि LHS में da and dl से कैंसिल किया जा सकता है. नाउ वी कैन राइट रो मल्टीप्लाइड बाई डेल v अपॉन डेल l मल्टीप्लाइड बाई डेल l अपॉन डेल t, sorry dl upon dt, del l upon del v multiplied by dl upon dt, and dl upon dt is velocity. Rate of change of displacement is velocity. So dl upon dt is velocity, here magnitude of velocity, that is a speed v. So in place of dl by dt we can write v plus v is the magnitude of velocity of the fluid which enters at in the B of the tube, plus del V upon del T bracket closed equals to minus del P upon del L, and second term भी जो कि cos थीटा का वैल्यू माइनस डेल एच अपॉन डेल एल है, इसलिए सेकेंड टर्म भी प्लस माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस रो जी मल्टीप्लाइड बाई del H upon del L, and suppose it is equation number 4, and this important equation is applicable to both a steady and unsteady fluid flow. A steady flow means in which the magnitude that is velocity, magnitude of velocity and direction of the fluid remains constant. It is called a steady flow. So at every point of the path of the fluid, that is at every point of the every fluid particle, a speed and magnitude of velocity and direction of fluid particles at every point of its path remains constant. It is called a steady flow of the fluid. So this important relation, which is rho multiplied by under bracket del v upon del l multiplied by v plus del v upon del t bracket closed equals to minus del p upon del l minus rho g into del h upon del l is applicable to both or holds both for a steady and unsteady fluid flow, and it is known as Euler's equation of fluid motion. So write down equation 4, this important equation. This important equation is known as Euler's equation of fluid motion. Now from Euler's equation of motion, which we have obtained in equation number 4, I am writing again. You can write down rho multiplied by under bracket del v upon del l multiplied by v plus del v upon del t bracket closed is equal to minus del p upon del l minus rho into g multiplied by del h upon del l in place of cos theta. So suppose it is equation number 4, and this important equation is known as Euler's equation of fluid motion, which is applicable to both a steady and unsteady fluid flow. Now from this important equation, that is Euler's equation of fluid motion, we can obtain Bernoulli's equation for non-viscous and incompressible fluid, that is for a liquid, and in case of a steady or a streamlined flow, since the velocity of the fluid particles or fluid molecules remains constant, that is a speed of the fluid remains constant, a speed and direction of the fluid do not change with time,
at a particular place, it is called a steady or a streamlined flow. So in case of a steady or a streamlined flow, del V upon del T, since velocity remains constant, so del V upon del T is equal to 0, and other partial derivatives in equation 4, that is equation number 4, that is Euler's equation of motion, become total derivative. So putting del P upon del T in LHS of equation 4, that is Euler's equation of fluid motion, is equal to 0, and the remaining partial derivatives, del V, in place of del V upon del L, we can write dV upon dL, and in place of del P upon del L, we can write dP upon dL, and in place of dH upon dL, we can write total derivative dH upon dL. We will obtain Bernoulli's equation for a non-viscous and incompressible fluid, that is for a liquid. So for write down for a streamline or a steady flow of a fluid, del V upon, since velocity at a particular point, particular place of the fluid remains constant, so del V upon del T equals to 0. क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पार्टिकुलर प्लेस पर, फ्लूइड फ्लो के प्रोसेस में जब स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है फ्लूइड का, तो अलग अलग पोजीशन पर फ्लूइड पाथ के और फ्लूइड्स के अलग अलग पार्टिकल्स का स्पीड अलग अलग पॉइंट्स पर कांस्टेंट होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, देयरफॉर del V अपॉन del T. तो वेलोसिटी में टाइम के साथ वेरिएशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सो del V अपॉन del T इज इक्वल टू 0, एंड द अदर partial derivatives becomes, and other partial derivatives becomes total derivatives. So now Euler's equation of motion given by 4 reduces to, so equation 4 becomes Euler's equation of motion reduces to or becomes, so Euler's equation of fluid motion, Euler's equation given by equation 4 becomes, in LHS it is, since dV by del V upon del T in the second term of LHS is 0, del V by del T के जगह 0 रखेंगे, तो अब LHS में केवल एक ही टर्म होगा, so it is rho multiplied by dV अपॉन del V अपॉन del L को अब टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिखा जाए, dV अपॉन dL multiplied by V equals to, in RHS it is minus dP upon dL, in place of minus del P upon del L minus rho G multiplied by, in place of del H by del L we can write dH upon dL, del H upon del L के जगह dH upon dL रिप्लेस किया जाएगा. And from this equation we can obtain Bernoulli's equation for a non-viscous and incompressible fluid by integrating this equation. dl in both sides will cancel out, RHS में dl कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर में, so we will left with rho, in LHS it is rho V dV equals to minus dP minus rho G into dH, और rho V dV
plus dp plus rho g dh equals to 0, taking minus dp and minus rho g dh in LHS, both terms will become positive. Minus dp and minus rho g dh को LHS में लाया गया. Now this equation becomes rho v dv plus dp plus rho g dh equals to 0. Suppose it is equation number 5. Integrating both sides of this equation, we will get Bernoulli equation. Integrating both sides of equation 5, we have, it is integral in first term rho integral rho v dv plus in second term it is dp, so integral dp plus third term is rho g dh, so it is rho g is constant, so it is taken out of the integral. रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों कांस्टेंट है, इसलिए रो जी को थर्ड टर्म में इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया गया. इंटीग्रल ऑफ डी एच इज इक्वल टू, इन आरएचएस इट इज इंटीग्रल ओवर 0. इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट, सो रो in the first term can be taken out of the integration because density of the liquid is constant. So first term is now rho integral into integral v dv plus second term is integral dp plus third term is rho g multiplied by integral dh and RHS is integral 0. And now we get integration of v dv is v square upon 2, v का पावर 1 है, so it is using the integration formula v1 plus 1 divided by 1 plus 1, that is v square by 2. So we get rho multiplied by v square upon 2, integral of the v dv, integration of v dv is equal to v square upon 2 plus integral of dp is p plus integral of rho g, rho g, third term is rho g multiplied by integral of dh is h. H is the height of the tube from a chosen plane and integral over 0 is constant. So we can write finally as therefore P, that is pressure energy per unit volume of the fluid, plus rho gh is the potential energy per unit volume of the fluid, plus half rho v square, that is kinetic energy per unit volume of the fluid, incompressible fluid, that is liquid, and for non-viscous fluid it is constant, that is sum of pressure energy per unit volume of the incompressible fluid plus its potential energy per unit volume rho gh plus its kinetic energy per unit volume, that is kinetic energy per unit volume of the incompressible fluid. Sum of all three terms is equal to constant and it is Bernoulli equation. Suppose it is equation number 6 and this equation is called Bernoulli equation. This is called, this equation is called, that is equation 6 is called Bernoulli equation for a non-viscous and incompressible fluid, that is liquid. Incompressible fluid, that is liquid. Thus we have obtained Bernoulli equation. So Bernoulli theorem states that total energy of a non-viscous and incompressible fluid at any section of the tube remains constant. This statement is called Bernoulli theorem, and mathematical form of Bernoulli's theorem, that is pressure energy per unit volume, a small p, plus potential energy per unit volume of the fluid rho gh, plus kinetic energy per unit volume of the fluid half rho v square. The sum of three
sum of these three remains constant. So this mathematical form of the statement of Bernoulli's principle is called Bernoulli's equation. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes.